Hello friends, this is your host Sandeep Singh and I welcome you on my channel Tax-Wise Insights. In today's video, we'll discuss about the latest GST updates from notification number 20 of 2024 issued on 8th of October 2024 by the CBIC. Now these amendments aim to streamline the processes and introduce new rules including the addition of section 74A and some other rules. So this particular notification is a very important notification, and so today I request you to please watch the video till the very end so that you understand each and everything discussed over here. So now let us dive deep into the key changes one by one. First and foremost, a new rule 47A has been introduced which deals with the time limit for issuing tax invoices. Now this starts from 1st November of 2024. Hence till date there was no time limit for issuing self-invoices under a reverse charge mechanism, but by this notification the CBIC has brought about a timeline during which you have to file the invoice. So if you are required to issue an invoice under the reverse charge mechanism, then you now have 30 days from the receipt of goods or services or both to issue the tax invoice. Earlier there was no system like this, but now you have got 30 days within which you have to generate the self-invoice. This applies to businesses under section 31(3)(f), that is when the registered person receives goods or services or both from a person who is not registered, that is under RCM. Next point is Rule 66. It deals with submission of TDS returns. This is also effective from 1st November 2024. So if you are responsible for deducting TDS under GST, then you must file your TDS returns. And how do you file your TDS returns? By filing the form GSTR 7, and the due date for this will be 10th of the following month. So that is for the month of October, you have to file before the 10th of November. So that is the TDS under GST. Another important amendment brought about by this notification is in regard to Rule 86, which deals with electronic credit ledger. This is also effective from 8th of October 2024, that is from the date of issuance of the notification. Here a minor change has been brought, and what is the minor change? The minor change reads like that: the words "in contravention of sub rule 10 of Rule 96" they have been removed permanently. So because of the removal of this particular section, headings to be restrictions are related to electronic credit ledger that have been taken care of and have been removed. Another very important point brought about by this notification is Rule 89, which deals with refund applications, and this is also effective from the date of the issuance of notification, that is 8th of October 2024. So several sub-rules have been simplified to make refund applications easier. Earlier the taxpayer used to always complain about very cumbersome refund processes. So this particular notification tries to bring about a simplified mechanism for the processing of refund. Now the calculation for refund has been simplified by removing the exceptions related to ITC. There were some exceptions related to ITC, and which was posing a hindrance in the processing and sanction of refund. So certain refund provisions for specific supplies have been removed. Now refund for ITCs are more straightforward now. So you see the intention of the legislature, the CBIC, is to make the process of refund as simplified as possible, so that there is no inconvenience to the taxpayer who is asking for refund. So in this regard, a change has been made in Rule 96 also. So if you remember, I had discussed about it in my last video, which dealt with Rule 96, refund of integrated taxes on exports. So this is also effective from 8th of October 2024. इसमें क्या था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शंस था, की रेस्ट्रिक्शन सब रूल 10 ऑफ रूल 96. इसके कारण क्या था कि काफ़ी दिक्कतें होती थी टैक्स पेयर को, स्पेशली पीपल हु एक्सपोर्टर्स टू गेट द बेनिफिट ऑफ रिफंड ऑफ IGST. So now this has been removed, and exporters can now claim refund on IGST hassle free, because that 9610 has been removed altogether. Another point which has been brought about by this particular notification is Rule 142, which deals with notices and orders for demand effective 1st of November. Please remember that this particular Rule 142 is effective from 1st of November 2024.
दिस रूल इंक्लूड सेक्शन 74A। आपको याद होगा जब ये फाइनेंस एक्ट आया था 2024 का, तो जो 74A है इसको उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया था, विच डील्स विद रिकवरी ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज इन केसेस related to fraud or suppression of facts. So the amendments align section 74A with the existing section 74 and make sure the recovery process is similar for both sections 73 as well as 74. So section 74A आ गया है, जिसके आने से ये सारा जो यूनिफाइड हो गया पूरा प्रोसेस. Another very important change brought about is a new rule 164. आपको याद होगा हमने बात की थी सेक्शन 128A के बारे में, जो कि ऑल्सो इफेक्टिव हो रहा है 1 नवंबर 2024 से. 128A में क्या था कि अगर आप टैक्स पे करते हो बिफोर 31 मार्च, देन आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी पे वेवर मिल जाएगा. सो सेक्शन 128 अलाउज फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टीज और बोथ अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस. कंडीशन क्या था कि आपको अपना टैक्स पे कर देना है 31 मार्च 2025 के पहले. सो नाउ लेट अस सी हाउ इट वर्क्स. आपको किस प्रकार से अप्लाई करना पड़ेगा to get the benefit of this particular section 128A. So application for a waiver can be made electronically. कैसे करना है आपको? इलेक्ट्रॉनिकली करना है by taking the help of form GST SPL 01 और GST SPL 02. कंडीशन क्या है कि जो पूरा टैक्स अमाउंट है that should have been paid, must have been paid before you apply for the waiver of interest and penalty. So टाइम लिमिट क्या है? The time limit for submitting the waiver application is 3 months. Please remember, 3 महीने के अंदर आपको ये अप्लाई करना है from the notified date, और 6 months in certain appeal cases. कुछ केसेस में क्या होता है कि आपने अपील दायर कर रखी होती है, उसमें क्या है आपको अपील पहले विड्रॉ करना पड़ेगा, इसीलिए आपको इसके ऐसे केसेस में 6 महीने दिए गए हैं. Now, if the waiver application suppose is rejected by the proper officer, then the original appeal जो आपने फाइल किया था that can be restored. सपोज आपने अपील विड्रॉ कर लिया और वेवर के लिए अप्लाई किया और वो वेवर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है, तो आप क्या कर सकते हो? आप अपने प्रीवियस अपील को रिस्टोर कर सकते हो. अभी अपील प्रोसीजर्स में भी कुछ चेंजेस आए हैं इफेक्टिव 1 नवंबर 2024. एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज आया है इसमें, दैट इज इन रिगार्ड टू प्री डिपॉजिट. जो प्री डिपॉजिट अमाउंट होता है, जो कि आपको पता है कि कोई भी अपील फाइल करने के पहले आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो जमा करना पड़ता है जीएसटी डिपार्टमेंट में, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हो अपील के लिए. तो इसका एक अमाउंट होता है. तो ये टू मेक द लाइफ ऑफ टैक्स पेयर्स ईजियर, सो जीएसटी CBIC ने क्या किया है कि इसका एक मिनिमम और मैक्सिमम प्री डिपॉजिट अमाउंट को फिक्स कर दिया है. उसको अभी क्या आज के डेट में क्या है, उसको 20 करोड़ ईच फॉर CGST, SGST और सेस, और ये जो मैक्सिमम लिमिट है ये 40 करोड़ से फॉर IGST. सो ध्यान रखिएगा कि 20 करोड़ फॉर CGST, SGST एंड सेस, और 40 करोड़ जो है वो IGST के लिए है. तो एक उन्होंने प्री डिपॉजिट को भी फिक्स कर दिया है मैक्सिमम, उसके ऊपर का फिर वही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अमेंडमेंट्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स, उन्होंने क्या किया है, CBIC ने बहुत सारे फॉर्म्स में भी अमेंडमेंट लेकर के आ गए हैं बाय दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन 20 of 2024. सेवरल GST फॉर्म्स लाइक REG 20 हो गया, GSTR 9 हो गया, APL 01 हो गया, या APL 05 हो गया, इसको अपडेट किया गया है टू रिफ्लेक्ट दीज न्यू रूल्स एंड प्रोसीजर्स. ये जो चेंजेस हैं, दीज आर डिजाइन टू मेक कंप्लायंस स्मूदर फॉर टैक्स पेयर्स. मतलब आइडिया क्या है पूरे नोटिफिकेशन का, क्या है, जो टैक्स पेयर्स हैं उनका जो लाइफ है, उनका जो प्रोसेस है जीएसटी क्लेम करने का, सिंप्लीफाई हो जाए, और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम था जीएसटी का, वो धीरे धीरे सरकार जो है सिंप्लीफाई कर रही है. तो दीज अमेंडमेंट्स मेक सिग्निफिकेंट चेंजेस, स्पेशली बाय इंट्रोड्यूसिंग द प्रोविजंस एज वी डिस्कस अर्लियर. इनसे क्या होता है कि काफ़ी सिंप्लीफाई हो रहा है. 74A तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले 73 अलग था, 74 था, अभी 74A कर दिया है. फाइनेंशियल बर्डन कम कर दिया टैक्स पेयर्स का फॉर फाइलिंग अपील्स. सो आपको इतना ही करना है कि आपका जो अपना सिस्टम है उसको पूरा अपडेट करना है विद द न्यू रूल्स, एंड ट्राई टू मेक फुल यूज ऑफ दीज वेरियस मेजर्स टेकन बाय CBIC. और ये जो रूल्स मोस्टली इफेक्टिव होंगे 1 नवंबर 2024 से, स्पेशली जो RCM का मैटर था, TDS का मैटर है. सो थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग.